Albendazole. Albendazole is also a benzimidazole and has a broad spectrum antihelminthic activity. Albendazole is an antihelminthic drug. It is a benzimidazole. It is a benzimidazole and has a broad spectrum antihelminthic activity. Albendazole is benzimidazole and has broad spectrum anti helminthic activity. The mechanism is similar to mebendazole. See, mebendazole is a benzimidazole. It has a broad spectrum anti-helminthic activity. It binds to the beta tubulin and inhibits microtubule polymerization. Mebendazole, it binds to the beta tubulin and inhibits the microtubule polymerization. It also blocks glucose transport in the parasite. As a result, intestinal parasites are immobilized or die slowly. तो दे बाइंड टू द बीटा ट्यूब्यूलिन जिसके कारण माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन इनहिबिट होता है. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को भी ब्लॉक करते हैं पैरासाइट्स में, जिसके कारण जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं वो या तो इमोबलाइज हो जाते हैं और दे डाई स्लोली. सो द मैकेनिज्म इज सिमिलर टू मेबेंडाजोल. Pharmacokinetics, it is given orally. It is erratically absorbed. Fatty food increases the absorption of albendazole, metabolized in liver. Oral, erratically absorbed. Fatty food increases its absorption, metabolized in liver. Produces an active metabolite, albendazole sulfoxide. Okay, the active metabolite is albendazole sulfoxide, which is widely distributed in various tissues, including hydatid cyst. So, the active metabolite is albendazole sulfoxide. Hence, albendazole is preferred to mebendazole in the treatment of hydatid cyst. ठीक है, तो ये जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है एल्बेंडाजोल सल्फॉक्साइड, ये हाइडाटेड सिस्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. So that's why albendazole is preferred to mebendazole in the treatment of hydatid cyst. Albendazole is very well tolerated. Very well tolerated. The side effects are rare but can cause nausea, vomiting, diarrhea, epigastric distress. During long term therapy, it may cause hepatic dysfunction, headache, dizziness, fever, weakness, loss of hair, and neutropenia. So they are generally well tolerated, very well tolerated, and they have rare side effects. Dose of administration, it can be taken as a single oral dose of 400 milligram for adults and children older than 2 years. Take a single oral dose of 400 milligram for adults and children older than 2 years, and 200 milligram single dose for children between 1 and 2 years of age. It is taken at any time of the day. It does not require fasting or purging, and side effects are rare. Okay. The side effects of albendazole are rare. For adults and children older than 2 years, it is taken as a single dose, oral dose of 400 milligram, and for children between 1 to 2 years, 200 milligram single dose. Let's see the uses of albendazole. Nematodes. Albendazole is highly effective against intestinal nematodes, that is, roundworm, hookworm, whipworm, pinworm, and threadworm, and also in mixed worm infestation. It is more effective than mebendazole in trichinosis. तो ये इंटेस्टाइनल नेमेटोड्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, विप वॉर्म, पिन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म. And also in mixed worm infestation, they are more effective than mebendazole in trichinosis. Neurocysticercosis. Both albendazole and praziquantel are highly effective in neurocysticercosis. Albendazole and praziquantel. But albendazole is preferred to praziquantel because of the following reasons. It is cheaper
ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ शॉर्टर। ठीक है, एल्बेंडाजोल को हम लोग न्यूरोसिस्टिकोसिस में, सिस्टिसरकोसिस में प्रेफर करते हैं टू प्रासिक्विंटल, क्योंकि एल्बेंडाजोल चीप होता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ शॉर्टर, it reaches the high concentration in brain and CSF. It reaches high concentration in brain and CSF. It is less toxic and better tolerated. Glucocorticoids increase plasma level of albendazole sulfoxide but decrease plasma praziquantel level. जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो एल्बेंडाजोल सल्फॉक्साइड के प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज़ करते हैं बट प्राजिक्वेंटल के लेवल्स को डिक्रीज़ करते हैं। तो एल्बेंडाजोल चीप है, ड्यूरेशन इसका शॉर्ट होगा, हाई कंसनट्रेशन रीच कर लेता है, लेस टॉक्सिक होता है और बेटर टॉलरेटेड होता है। हाई डोजेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर ऑल्सो गिवन विथ albendazole or praziquantel to minimize the inflammatory reaction to the dying parasites. Drug treatment is contraindicated in ocular cysticercosis. Ocular cysticercosis में blindness can occur due to inflammatory reaction. So drug treatment is contraindicated in ocular cysticercosis. It is used in hydatid disease, hydatid cyst. Surgical resection is the treatment of choice, but albendazole is the drug of choice for medical treatment. Filariasis. Single dose of 400 milligram albendazole is given with diethyl carbamazine citrate, or ivermectin is the treatment of lymphatic filariasis. Albendazole has a adjuvant value. सो फिलेरियसिस के ट्रीटमेंट में सिंगल डोज ऑफ 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल इज गिवन विद डाईइथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट और आइवरमेक्टिन. एल्बेंडाजोल इज ऑल्सो इफेक्टिव इन क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस. ठीक है, तो यूजर्स क्या हो गया नेमेटोड्स के लिए न्यूरोसिस्टिसरकोसिस में, हाइडाटेड सिस्ट में और फिलेरियसिस में. ठीक है, तो एल्बेंडाजोल का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ओरल. ठीक है, अडल्ट में या चिल्ड्रन अबव 2 years में इट इज़ गिवन एज अ सिंगल ओरल डोज ऑफ 400 मिलीग्राम फॉर अडल्ट एंड चिल्ड्रन ओल्डर देन 2 years, और 1 से 2 साल के बच्चों में 200 मिलीग्राम सिंगल डोज ओरली. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ओरल.